जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात आज हम कराने जा रहे हैं श्री रमेश कुमार मंटू जी से, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी है कश्मीरी हिंदू कल्चर वेलफेयर ट्रस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट हिंदू समिति कर्नाटका। 1992 से 2009 तक ये कार्यरत रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले रमेश जी, आप हमें अपने बारे में, अपने रूट्स के बारे में बताइए तो हमारे दर्शकों को पता लगे आपके बारे में। देखिए, आई हैव लेफ्ट, मैंने कश्मीर 1978 में छोड़ा है। इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं चेन्नई गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशंस एंड इन 1980 आई जॉइंड इंडियन एक्सप्रेस as a reporter and continued with Indian Express till 2008 for 28 years. And I was the editor of Indian Express Karnataka edition at that point of time, 2008, when I left and resigned. And after that, I joined a company called Suzlon Energy Limited. We are into the wind energy. And I joined as the general manager, in charge of, heading the operations in Karnataka. From 2009, I am continuing with them till date. जी 2008 जी रोमित जी, आप हमें ये बताइए कि जो अभी कश्मीरी एसोसिएशन जिसके साथ आप जुड़े हैं, उसका क्या काम अभी तक हुआ, उसके बारे में, स्पेशली जो आपने वहां पे कार्य किए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। I will tell you briefly. See, this is a passion. It cannot be with everybody, but with some people. तो when जब मैं यहाँ गया, मद्रास गया 78 में, तो वहाँ पर तो लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट एंड कम्युनिकेशन वाज नॉट एट ऑल. आई यूज्ड टू गेट ओनली 1 लेटर इन अ मंथ फ्रॉम माय फादर. तो उस टाइम वहाँ पर 5 या 6 फैमिलीज थी. सो वी वर क्रेविंग फॉर ऑल दोस थिंग्स एंड आई स्टार्टेड कमिंग आउट विद पंचांग. वो जो हमारी जंतरी थी उनको मैं निकालता था लिथो करके. आई वाज डूइंग माय जर्नलिज्म एंड ऑल दैट, एंड वहाँ से शुरू हो गया ये. Then in 1990 I was transferred to, मुझको भेजा गया बेंगलोर. जब मैं यहाँ पर आया तो I saw there was a chunk of people because of migration and all that. वो आए थे यहाँ पर and they were all from HMT and ITI, nearly 129 families. And हम एक फैमिली की जब बात करते हैं, उस समय एक फैमिली में 4 आदमी नहीं होते थे. उनके भाई बहन, उनकी दादा दादी, फादर मदर, और एक आदमी एचएमटी में था, और वो 10-10 लोगों की फैमिली, 8-8. एंड व्हेन दे लैंडेड हियर दे वर इन अ चोल्ट्री में बैठे थे. वो कर रहे थे. दैट टाइम आई वाज कॉल्ड, क्योंकि वन मिस्टर रैना वाज हियर एंड ही न्यू मी फ्रॉम बैंगलोर. उसने बोला कि भाई आई मीन फ्रॉम चेन्नई. तो उसने बोला कि अरे यार आप जाओ, आपको दिखाता हूँ मैं क्या है यहाँ पर हालत लोगों की. एंड सिंस आई वाज इन द प्रेस, आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चीफ रिपोर्टर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस हियर एंड ऑल दैट. So when I went, my heart melted. I said, what is happening here and all that, because they were on streets. बिल्कुल सड़क पे थे वो सभी. उनके छोटे छोटे बच्चे, वो ये ना, उनके पास गैस ना कुछ भी नहीं था उनके पास. Nothing they had with them. They were mostly from IIT and ITI and Indian Telephone Industry and HMT. Nearly 130-150 families. So I said, okay. Then we started. It all happened in 1991. And then we formed this Karnataka Hindu Samiti. Initially, somebody was the president. Immediately, they told me, and I used all my might as a journalist. Right. And I went here and there and tried to help them out, whichever way we wanted. In fact, getting a train ticket was a problem those days. Getting admission in schools was a problem. Getting admission in colleges was a problem. और बिल्कुल राशन कार्ड नहीं था किसी के पास accommodation नहीं दे रहे थे HMT में. Then we started a group, a dedicated group of people were there, and we went and I led them, and we started doing all these small jobs. किसी के पास कोई बीमार पड़ता था, उसके पास कुछ पैसे नहीं होते थे. I used my I won't say I misused. I used my position and got them relief from Chief Minister's Relief Fund and all that. And we created a fund and then started helping. उसके बाद क्या हुआ कि in 2001 में Krishna government came. So we placed 3 demands in front of them. SM Krishna जो था, उसके पास हमने 3 डिमांड बोली. हमने बोले कि हमको एक तो प्रमाण पत्र चाहिए, हमको we want identity card.
Right. because we could have some this thing, because we are not in Delhi and Jammu where they were giving relief cards and all that. DC was giving all those things. We were not having it here. So we said we want some recognition from you that we are all displaced people from Kashmir. So he Right. said, okay, agreed, I will give you. So 423 people were given, families were given the card. Still we have that Okay. yellow card with us, where they say that they are all displaced people who have come from Kashmir in 1990. वो किया हमने. Second thing, we told him we want reservations in professional colleges. At that point in time, we were only in Maharashtra. So that was also this thing. And then, immediately after Maharashtra, we were the first state to get it. उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो नोटिफिकेशन नहीं आया था. बेस्ड ऑन व्हाट महाराष्ट्र डिड, आई कोटेड दैट, एंड दे सेड ओके, वी विल ग्रांट दिस आल्सो, एंड दे गेव अस 1 seat in engineering college and 1 seat in medical college. So from 2002 onwards, we are giving 20 doctors to the community. Okay. 20 doctors every year to the community. It's a free seat. And 159 engineers every year. And the system is pakka. There is no deviation in this. Everything merit, everything is displayed on the list, and it is going on its own. We don't go there. No, people come, they apply online, do it, and get their seat and study. This is what we did. Third thing, we told him that we want a common address here. We want some place where we can have a bhavan. So they gave us a space in the heart of the city, that is Jainagar. They gave us place, and we constructed a bhavan. Okay. Which is a 3-storied bhavan, 15,000 square feet of this thing, covered space, with a hall, with an auditorium, AC auditorium. It has a elevator, lift. It has all the minimum facilities. Then we created the first of its kind, one Martyrs Memorial. Okay. Nowhere else it is in the world. Kashmiri KP Martyrs Memorial. So we created that also. On 14th of September, we pay our obeisance to that. Then we created a small temple also here. And that is also there in Shiva temple, because we thought that we are all Shiv Bhakts and on Herath and all that. Uske बावजूद, there is another group on Bhagwan Gopinath Ji Bhavan. They created a big Bhavan here. Bhagwan Gopinath Ji Ashram है. हमारे पास एक और temple है, Shelpatri temple है यहाँ पर. That was also created by another group of people. There is another one more ashram by Bhagwan Gopinath Ji in that, because this city is very big. So we are having, and now today we are having nearly 700 members, registered members in our trust. They are our members, and we are doing a lot of things. And recently in this COVID also, we have opened our coffers, and we said the 50 lakh rupees we are going to give it to the COVID. कोविड के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे. कोविड के बारे में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कितना परिश्रम, कितनी मेहनत किसी काम के पीछे होती है. आप देख सकते हैं कि रोमेश जी कितने व्यस्त अपने काम के बावजूद, इतना इनका टाइट शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कम्युनिटी के लिए इतना काम किया, इतनी चीजें, जैसा कि एक भवन बनाया, वहां मार्टियर्स का मेमोरियल जो इन्होंने बोला, वो चीजें हुई हैं. तो प्रैक्टिकली इन्होंने काम करके दिखाया है, और जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो रजिस्टर्ड, उनका एक कार्ड बनवाया है ताकि वो सब एक छत के अंडर आए, एक रूफ के अंडर आए. रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एक मैगजीन, कश्मीरी मैगजीन भी पब्लिश की. कैसे आप इतना सब काम करने के बावजूद प्रोफेशनली भी एंगेज थे, और उसके बाद एक मैगजीन को भी रन करना, चलाना, इसके बारे में जरूर बताइए. देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कैसे ये हुआ. एक दिन हम जब यहाँ पर हम काम करते थे, बहुत काम करते थे, तो वहां पर उन दिनों एक ही मैगजीन था विच वाज वेरी पॉपुलर, दैट वाज कश्मीर समाचार. So we struggled hard. वो हमारी न्यूज साउथ की कोई निकालता नहीं था. हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, हमने क्या किया है, अचीव किया, क्या नहीं किया. लेकिन जब उन्होंने वो कुछ नहीं करते थे, then one day, because I am a journalist myself, मैंने उनको बोला कि यार, I got one thought. मैंने बोला इसका नाम हम आलव रखेंगे, and we'll bring out this community magazine. So we started bringing out this community magazine in 2000 year 2000. And 2000 से लेकर 2009 तक, every month we brought out this magazine, which gave a lot of this thing, and we carried only community news in that. Right. And that was one magazine. And in 2009, this wound up, because when I left Kashmiri Hindu Samiti and it became defunct, Kashmiri Hindu Samiti, तो चल नहीं पाई. तो उसके बाद वो मैगजीन भी बंद हो गया. उसके 1-2 इशू निकाले, and you know what happened and all that. छोड़ दो उसको, that's a history. That immediately I started in July
2009, I started one more magazine called Spade a Spade, and which is in the 13th year. आज 13th year में है, and it is coming out on 5th of every month regularly. And it is not circulated only among the community members, but it is circulated pan India. It goes to all the people who matter for us, and our views are reaching to them. And that's how we are surviving here with all these magazines and other things. Right. जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो मैगजीन भी अभी आ रही है, आप उसका सर्कुलेशन चल रहा है। कोविड की बात की आपने, तो हम जानना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वेव कोविड का आया उसमें बहुत सारा लॉस हुआ केपी कम्युनिटी को। उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, तो उसके बारे में जरूर हमें बताइए। देखिए, पहली वेव जब आ गई तो एवरीबडी डिड नॉट वाज क्लूलेस अबाउट इट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नोबडी न्यू। वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो करो ये करो, हम करते थे। इवन द डॉक्टर्स वर चेंजिंग देयर गोल पोस्ट एवरी टाइम एंड ऑल दैट, कुड नॉट डू एनीथिंग। एंड फर्स्ट वेव में ज्यादा कुछ हो गई, कुछ कैजुअलिटीज हमारी कम्युनिटी में भी हो गई, यहाँ पर बहुत हो गई, तो लेकिन इट वाज नॉट दैट सीवियर। तो जब वो वेव खत्म हो गई तो होने लगी, तो व्हेन देन वी वोक अप, वी सेड नो, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। तो वी बिकेम कॉन्शियस अबाउट इट। उसके लिए हमने सोचा कि क्या करेंगे। एंड देन सेकेंड वेव स्टार्टेड। जब सेकेंड वेव शुरू हो गई, देन इट वाज अ वेरी सीवियर वेव, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। यहाँ पर भी 2-3 कैजुअलिटीज हो गई, बट 4-5 कैजुअलिटीज यहाँ पर हो गई। लेकिन हमारा जो दिल था वो धड़क रहा था हमारे अपने ब्रदरन के लिए, जो कि हमारे एनसीआर में थे, दिल्ली में थे, जम्मू में थे, और वहां पर तो तबाही मचा दी उन्होंने। एंड दैट टू इट टुक द टोल, जितने भी यंगस्टर्स थे हमारे वो खराब हो गए। तो इमीडिएटली वी हैव यंगस्टर्स हियर, दे फॉर्म्ड अ ग्रुप। उन्होंने बोला कि हम एक ग्रुप बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है, राकेश जी है एक, उसमें रचना है, लेडीज एंड ऑल दैट, क्रेडिट गोज टू देम। दे फॉर्म्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया, एंड देन दे स्टार्टेड। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला जो भी आपको चाहिए, द ट्रस्ट विल सपोर्ट यू। वी हैव अ ट्रस्ट विद 25 ट्रस्टीज। हमने बोला कि हम ट्रस्ट जितना भी आपको चाहिए, फाइनेंशियल हो या क्या हो, वी आर सपोर्टिंग यू, बट आप इसको देखिए क्या करना है। देन वी स्टार्टेड दिस ग्रुप। ये बहुत पॉपुलर ग्रुप हो गया। वी रीच टू ईच एंड एवरी कोविड अफेक्टेड पर्सन। उनको हमने दवाइयाँ दे दी, उनको हमने ये दे दिया। एंड इमीडिएटली देन वी हैव गॉट अ ट्रस्टी इन दुबई, मिस्टर विकेश होगरा साहब। So immediately he said nothing, we must do something, and we were the first to get 5 concentrators, oxygen concentrators, which were gifted by him. उससे बोला नहीं, आप रखो यहाँ पर जिनको चाहिए, because that was the main thing in second COVID wave. वो हमने रखे। Then thanks to one Rakesh Thaplu of KOA, he immediately contacted me and he said we will also send you 10 concentrators. उन्होंने 10 भेजे। Then there was another doctor, Mr. Sanjay, so he also sent some oximeters and all that. With this, we reached everyone, and not that, we used to deliver these oximeters. There is Dheeraj Kohl, Rachna, right. Then doctors, 5 doctors. We have 5 Kashmiri doctors here who were on the panel, and they were given live consultations to all the patients जिनको चाहिए थी, क्या करना है, कैसे करना, how to use concentrators. And we did a considerable job on this thing, and with the grace of God, not much of loss to the lives, but people suffered extensively. We got them admissions in hospitals, we got everything. Whatever we could do with our might, we approached the government, we did everything with the help of everyone. Everyone came on the ground and they helped. And this was a very successful this thing. And immediately after that, when we saw the loss both ho gaya hai, then we had some reserves in our trust. Nearly 50 lakh rupees, we said we are going to earmark it for COVID affected patients, not only in Bangalore, but all over the country, yahan par hai. And 16 COVID related patients we have already adopted, 3-4 in Jammu. There is one in 2 are in Delhi, ek Faridabad mein hai, 2-3 isme hai. And then we are also having a fund called Nilkanteshwara Medical and Education Fund on the lines of KMECT. We cannot compete with KMECT. KMECT is a bigger organization, old organization. They're doing a wonderful job. But because they don't have resources to mobilize funds from South, so we are doing it in coordination with them. Wherever they go, we don't go. Wherever we go, they contact us and they don't go. And through this also, we distributed a lot of things. And for 1 year, we have adopted these 16 families. We are looking after their education, children's education, जो भी है, जहाँ पर collateral damage हो गया इनको, जहाँ पर बिल्कुल they are on this thing.
वो भी हमने कर दिया है. And outgo of this whole thing is nearly 3 lakh rupees a month. वो जाता है on daily basis. Plus we have given one-time assistance up to 2 lakh rupees to people also. So this is a continuous process. This will go on for another 1 year. जी, बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है. हम जानना चाहेंगे, अभी बहुत सारी बातें करनी है, जैसे कि अभी रिसेंटली AIKS की जो इलेक्शन हुई थी, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे रिटर्न पॉलिसी को लेके, क्योंकि हम हर एक सभी से बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी को लेके. आपका क्या मत है? क्योंकि आपने भी कश्मीर को नजर रखे हुए हैं, आप उसको नजर बनाए हुए हैं इस मुद्दे पे. तो रिटर्न पॉलिसी आपके हिसाब से होमलैंड है या वन प्लेस सेटलमेंट है? आपकी राय क्या है इसके बारे में? देखिए, मैं आई एम अ वेरी एक्टिव सपोर्टर ऑफ ऑन कश्मीर, जो कि मार्गदर्शन रेजोल्यूशन था हमारा 1991 का. दैट इज अ क्लासिक दिस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट टेक इट फर्दर. हम नहीं चढ़ा पाए उसको आगे. बट होमलैंड जो है, दैट इज इन एवरी कश्मीरीज हार्ट. We would like to go back. Every Kashmiri would like to go back to his homeland. That is one. Second thing is, कुछ भी हमारी भी fault है. We could not pursue it. क्या है वो है, आपको we'll come to that if you ask me anything on that. But as of today, government of India under Modi ji, they are very sincere about our helping us to bring us back, to bring not only Kashmiris but also to retrieve the Kashmir J&K state and integrate it fully with this thing. Already he has started the initiations and all that. Now, सवाल ये बनता है कि the problem is very complex, and providing security to each and every person if they will go back to this thing is a very Herculean task for any government to provide security to each and everybody. What happens every time there's a sporting incidents here and there, usko mara, and we are never welcome there. And we have been thrown out by the same people who are there today. Now, if you want to go and integrate with them, that's also, I don't know how they are going to do it. People, they claim that halat theek ho gaya, nahi ho gaya, but definitely a Kashmiri Pandit will not trust. जो कि हम एक बार दूध का छाछ का चला हुआ दूध को भी, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक के पीता है. So definitely we will not do it. The best solution is to go at one place, but getting at one place, carving out of one place may not be possible also for the government of India. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, and then giving it. वो है, that is a very good viable solution. But even if they make townships, big townships at 2-3 places and 2-3 districts of Kashmir and take us back, that is also viable. But we don't know what is the government of India thinking about it, how they are going to have the return policy. Right. But return is a must. I am for return. We should go and claim our land back. That is right. हम बात जरूर करना चाहेंगे कि एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने बोला रिटर्न, के आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो केपीज रहते हैं वो रिटर्न में वापस कश्मीर चले जाएंगे? देखिए रोहित जी, you are a young man, you are a young boy, and I really admire you, and I wish you should grow and all that. You are a journalist, you have that analytic mind and all that. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेटल हूँ 30 साल से, 35 साल से, 78 से मैं बाहर आया हूँ. तो अब यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर ही पैदा हो गए. माई डॉटर इज इन US, माई सन इज वर्किंग हियर. अब उनके लिए उनको इनकलकुलेट करना कश्मीर. सो इन 2009 जैसे हमको सभी बोलते हैं कश्मीरी हो, हम गए नहीं कश्मीर. आई टुक देम इन 2009. I took them to Kashmir for 10 days. मैंने बोला ठीक है, because it's my mistake. I took them for 10 days and brought them back. They said at least we should tell them what Kashmir is. They are all saying that you are Kashmiri. Right. That is one. Second thing is, for me, I may not go back. I will not go back. For me, now Bangalore is my hometown. Right. But we are again forgetting. This is the problem with us. We are forgetting the people who are in Jammu, the people who remained in Kashmir. There is a large chunk of people who are there.
There's a large chunk of people who have taken employment there in J&K. There's a large chunk of people who are in Jammu who could not come up to the desired levels. Have we ever bothered about them? Tell me. Right. Which leader has bothered about them? Which organization has bothered about them? We have left them and we only looked after our own individual these things and came up to this thing. It is our duty to look after these people and see that these are the people who will go and re-establish Kashmiri Pandits back in Kashmir. And we should give them a helping hand. We should support them totally, financially, emotionally, and everything. Imagine they could not come out because of poverty. They could not come because of उनकी गुर्बत थी, वो थी, पैसा नहीं था, आदों की जमीन थी, आदों का कुछ था. Everybody was not affluent and intelligent enough to leave everything there and come and re-establish himself again. तो वो दूसरी बात है. But लेकिन we should look after these people. They are not in thousands, they are in lakhs. Nearly 1 lakh people who are really ready to go back. 1 lakh is not a small number. And if we are going to resettle them again in 1 or 2 clusters, it is going to re-establish Kashmiri Pandit back there. So we should think about them. You should not ask me whether you come back or not. I will definitely come back. I may come back. I may see what is happening. But I should think about those people first and then only think about mine. जी जी रोमेश जी, अब एक और अहम मुद्दा जो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, जो ऑल इंडिया कश्मीर समाज का जो इलेक्शन हुआ था उस प्रोसेस में डॉक्टर रोमेश रैना जी से हमने जब बात की, वार्तालाप किया, तो उसमें उन्होंने कुछ चीजों का खुलासा किया. जैसे उन्होंने बोला कि हर एक जगह जहां पे भी इलेक्शंस होती हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस ले लो, वहां पे ये इश्यूज क्रिएट हो ही जाते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी कम्युनिटी हम हैं, अगर यहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट होंगे, बहुत कम लोग हैं हम आपस में, यहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो वो कहीं जस्टिफाई नहीं होता. सबसे पहले आप हमें बताइए क्या कंट्रोवर्सी हुई है. देखिए हरोज जी, आई एम नॉट न्यू टू ऑल इंडिया कश्मीरी समाज. आई एम ए पैटर्न मेंबर देयर फॉर इयर्स टुगेदर. अब 2004 में we had a 2007 में 2006-7 में 2004 or 5 में we had a conference in Calcutta, All India conference, while I was there and Mr. Kaab Saab was there as president. Right. We passed a resolution. I don't know why Kashmiri people are so much averse to politics. Hey, political party, hey, political parties. Why shouldn't we? It's not a crime to associate yourself with a political party. It's not a crime. If we are not able to play politics, we should not. We should remain aloof. But it's not a crime to associate yourself with any political party. So we passed a resolution that we will float a political party. In All India Kashmiri Samaj 2004. It was passed, it was announced in Calcutta. When we reached Delhi, they backtracked. काब साहब टेलीफोन में ऐसा रहा ना, ये इतना सीखीहीन बाइलाज में कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. This will boomerang on us. We are a social organization. We should not associate ourselves with politics. I said, Baba, if it is not there, we will change the bylaws. We will incorporate it. But without politics, we cannot put our. Yeah. And then I resigned from AIKS. As a vice president, I was a senior vice president at that point of time. I resigned. I said, I have nothing to do with you. And then we floated our own political party of Kashmiri Pandits, जिसमें ये थे कौन हमारे पैरेलल राजदान, myself and Diwani Saab. So we formed a political party in 2007 and 8. 8 में we contested even elections, Jammu Kashmir state elections also. And I was continuing here as a this thing वो चल रहा था. उसके बाद we did not win any seat and it became a defunct. 2008 के बाद इसमें कोई नहीं है, वो छोड़ दो. Now I was not invited and they made this Kashmiri Hindu Samiti as the affiliate here and all that with this thing of which I am the founder president. But उसका कुछ नहीं, यहाँ पर वो खत्म हो गई है पार्टी, but they are still clinging on to him because of the votes. Right. ये हो रही है, वहाँ पर ये था. I did not like it at all and they never recognized us as this thing. Same way, All India Kashmiri Samaj kept KSD, Kashmiri Samiti Delhi, which is one of the nodal this organization. वहाँ पर उसको भी बाहर रखे. आपकी जम्मू की अम्फाला उसको भी बाहर रखे. जितने भी बड़ी बड़ी credible organization थी जिन्होंने काम किया था उनको बाहर रखे. And today आपको हैरत होगी कि today we have got 156 life members total.
113 pattern members, यही है total, and there are 14 live affiliates according to them. इतना ही है, and we call it as an All India Kashmiri Samaj, which is supposed to be a nodal agency, an umbrella organization. Right. So I have been telling them, because I could not tell them anything. I have been telling people that I said, yeah, why the government of India is not, हमने देखिए, if you ask me, I bow my head in shame, because as a community we have not achieved anything. Individually, individual organizations must have achieved something here and there, like we have achieved something here and there on that. But as a community, with the government of India, we have not been able to achieve anything. हमने कुछ कोई चीज हमने achieve नहीं अभी तक किया. I bow my head in shame, and I cannot say that all these achievements are achievements. No, on major issues like return policy, हमने कुछ नहीं किया. We could not even remove the tag of a migrant from us, though we wanted that we should be called as internally displaced people. वो भी हमने नहीं किया. आपको पता है recently मीनाक्षी लेखी ने क्या किया? What she said, she gave a dictionary. This is shape. कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम हैं. And All India Kashmiri Samaj in the last 30 years could not rise because of all these small petty things. आप बोलिए मुझे, अगर All India Kashmiri Samaj है, it is because of the affiliates. It is an affiliates organization, not individual organizations. And if you see this 156 live members and 13 patron members, 113 patron members, कितने हो गए total? 270, 260. Or they claim that we have got 43 affiliates, which are not there at all. When it came to, there are only 14 affiliates. उसमें भी 3-4 दोगले हैं. Cases, it's not this thing at all. They don't have a voting right. उनको भी दे दिए उन्होंने 6 वोट. Kashmiri Samiti, this thing. So I said, boss, this is sham. Unless and until we should have an umbrella organization to represent Kashmiri Pandits with the government of India, तब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है. एंड तब तक आप रोते रहो, सभी रोएंगे, हमको नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया, इसने नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया. So we will be always neglected, but we should blame ourselves for this. So मैंने सोचा कि now I am just 60, across 60, just this thing. I thought I have got another 3-4 years, because I am looking for a successor here in this thing, because I'm tired now. For last 30 years I have been at the helm of affairs here. I'm looking for a successor. मैंने बोला कि ये 3 साल, I came out with the manifesto. मैंने बोला कि ठीक है. I said I also applied for this thing. मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है. I want to broad base All India Kashmiri Samaj, give representation in each and every state. उनकी जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन उनको दे दो, and make it a real umbrella organization and give voting rights only to these affiliates, not to these individual members. वो आज, this is the oldest organization. इसमें से आपको हैरत होगी कि 156 लाइव मेंबर्स में से आधे एक्सपायर हो गए. नॉट आधे, बट a few. 113 में से 8 लोग पैटर्न मेंबर में से 8-10 लोग खत्म हो गए. अच्छा. And these two form the votary of this All India Kashmiri Samaj. And देखिए क्या बोलूंगा मैं आपको. देखिए लाइफ मेंबर में only 34 people are from outside NCR and Delhi area. पैटर्न मेंबर में से only 33 are from outside this thing. Rest of all are there. अभी क्या हुआ कि मैंने बोला कि यार हमको अभी कुछ नहीं चाहिए. Now if you want, now 30 years we have spoiled. This is what I have said in my manifesto, which is with everyone. Right. मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना. I will go there. We will broad base it. We will only take up 2 issues. One is return and rehabilitation. Second one is genocide. Because genocide, हमारे जितनों ने हमको कत्ल किया, starting from Farooq Abdullah, who was presiding over everything, they are all moving freely. Pukupare, wo, ye sabhi, they are all moving freely. Yasin Malik, those who claimed on TV, हमने उनके बारे में कुछ नहीं किया. We could not even succeed in Supreme Court. We did not follow anything in Supreme Court. We did not pursue it in Supreme Court. This is what I said, that we will take up these 3-4 issues. Every day go there to get this thing, and we will tell all the affiliates that barring these 2 issues, you do whatever you want to do. But on these 2 issues, don't oppose us. And we'll take representation from all the states, form a big committee, and then this will become credible, and government of India will have no choice but to listen to us. This was my manifesto. मैंने बोला ये काम खत्म हो जाएगा, 3 साल में खत्म हो जाएगा, या उससे जल्दी खत्म हो जाएगा. I'll come back. It is to be run by people. If this is an organization, the oldest organization, supposed to be umbrella organization with 200 members total and 13 affiliates,
how it becomes a representative organization of this thing? तो मैंने यही बोला, when I contested, I filed my nomination on 8th of April 2020. Right. Both RO, Mr. Roop Krishan Bhatt, he was very nice. Roop Krishan Rana was very nice. They spoke to me very good. Colonel Tikku, who was the president, he was very good. वही है, हम यार छोड़ना चाहते हैं, we want to leave, यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं करने देते, ठीक है. I don't want to get into those details. मैंने बोला ठीक है साहब, this is my mission. मैं यही करना चाहता हूँ, because I have put a system in place in Bangalore. We will put a system in place so that we will not be found wanting about all these things. हमको भी seriously ले लेंगे लोग, because this is one of the greatest thing we have. We don't have unity, they say. Right. Then they send me this list and all that. मैंने जब list देखे, वहां पर मैंने देखे 156 members, उसमें तो आधे मरे हुए हैं. How their name is appearing as the voters? उनके आधों के एड्रेस नहीं है, आधों के टेलीफोन नंबर नहीं है, आधों के ये नहीं है. मैंने बोला यार साहब इसको जरा अपडेट करो. How will do it? Then they updated and put in brackets expired. ऐसे ही रखा, लेकिन उसमें expired लिख लिया. Okay. Then pattern members, they are all from 1947 से जो member बने हैं इसमें, जब भी आ गई है, इलाहाबाद में ये रजिस्टर हो गई थी. It was a social organization, all that. Then affiliates. मैं आपको ये रोकना नहीं, मैंने इनको बोला कि दिल्ली की नहीं, one minute, just let me complete. Let me complete. Okay. So then COVID started. मैंने उनको बोला भैया, COVID is at peak. We should not hold the elections. This is not the time. कौन से तीर हमने मारे 3 साल या 8 साल या 10 साल पीछे इससे? Because all the elections have been stalled by Government of India, Health Department, pandemic की वजह से कर दो भाई बात. So they postponed. कर दिया भाई, postpone एक बार कर दिया. Then I said, now you got the time. इसको जरा set right करो. इसको please set right all these things. They did not do it. Then they said, no, ballot paper से हम करेंगे. I said, this is not a ballot paper. देखिए सर, ये है आपका ballot paper. It's a trash paper. ना इसमें serial number है, ना इसमें signature है किसी का, ना seal है. And this was circulated all through email. मैंने बोला इसकी क्या सैनिटी है, इसको जरा यार सीरियल नंबर तो दे दो ऊपर, so that we will know. नहीं माने. And initially they were listening to me. Afterward I gave 5-10 protests. मैंने बोला कि अब आपको भगवान ने आपको टाइम दिया है, इसको सेट राइट करो. And if you go to election, let us set an example for other organizations. आज के डेट में क्या है कि KSS फरीदाबाद gone to litigation. KSS गुड़गांव, दूसरी वाली KSS गुड़गांव gone to litigation. Like so many organizations, वो कर दो. I was not in favor of that. मैंने बोला हमारा अपना internal है, हम करेंगे. After in the last 3 weeks now, they are not listening to anyone. मैंने बोला यार छोड़ दो अभी. No elections are happening. There's a way. Then on 5th of August, they said no, we are having elections on 29th of August, and it will be only through ballot. अब ballot क्या हुआ कि उसी दिन उन्होंने बोला कि already we have received the ballot papers, postal ballot papers of life members 34, patron members 33, and 10 affiliates, totaling to nearly 129 ballot papers they have received already on 5th of August. वो किसके पास थे, who was the custodian, किसके सामने खोले, and then they said we would hold the election on 29th को. आप बोले मुझे, why should they go to a far off place in Mangal Dawat, in a private bungalow for counting, and they declare this on 25th, saying that 29th को हम इधर जा रहे हैं counting के लिए. Why? You tell me, sir. And when I have not accepted, मैंने कभी किसी को वोट नहीं मांगा. Let's anybody in the country say that I asked him for vote. मैंने अपना खाली ये प्रमाण पत्र बोला था ये मेरा है, and this is my manifesto. मैंने इनको मिन्नतें की कि भाई let us separate the things, call for an AGM. You please hold postpone the elections, separate these things. न तो ये बोले तुम गलत बोलते हो, न बोले तुम ठीक बोलते हो, न कुछ किया. And they were rushing through. With the result, क्या हुआ कि there are so many complaints where people have gone with this thing to their houses in NCR. मैंने बोला ना, only 10% members are outside. All are in NCR, Faridabad and all that. They have gone to their houses. Hey, यार तुम्हारा दस्खत, यार तो ठीक है से अपना आवाज. तो बस बेको तो दस्खत आ गए. कोर्ट में वोटर दस्खत, बेहो तो कार्ड कम अच्छा. They are supposed to be sealed. They are supposed to be sacred papers. And how can they hold elections if the original notification is that election will be on one day
How can they now change it subsequently and all that? They should have cancelled this and this. I'm not saying anything. I'm not against anybody. I have not said a word against Ramesh Raina. Everybody has contributed. Maybe he will do much better than anybody else. Maybe he will do it. But the elections were sham. Right from day one, I have been saying, I said, let us set an example. ये नहीं होना चाहिए 119 हम आगे हम भी जीत गए एंड देन फाइनली दे केम आउट विद दिस थिंग दिस इज द देखिए कौन है इसमें मेरा कौन सा आदमी है वहां पर मेरा कौन सा वोट है यहाँ पर ये 7 वोट दे हैव डिफेम्ड मी बाय सेइंग दैट ही हैज गॉट ओनली 7 votes when I am not in the election at all when I have given it in writing that I don't accept this election at all you please this is sham you please correct all these things एक बैलेट पेपर को चेंज करो दिस इज अ ट्रैश पेपर एनीबडी कैन मैनिपुलेट दिस व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट इन द AIKS इलेक्शन दे डिड नॉट एंड दे थॉट दैट इलेक्शन ऑल नाम बड़े ऑल इंडिया कश्मीरी समाज बट लेकिन काम बड़े छोटे एंड आई एम सॉरी इफ our elders will set this example of this thing and all that on 24th I went to the Allahabad this thing I gave them a complaint saying that उसको जरा पता करो यार मैं कहाँ हूँ मेरा नाम लाए हैं ये अजी 7 वोट उसको मिला है उसको कौन से 127 वोटों से क्या हो गया मैंने बोला ये बात नहीं है they have defamed me I have never been in the elections I have been pointing out and they don't have courtesy to even pick up my phone as a contesting candidate I am telling them यार फोन तो उठाओ नहीं करते फोन नहीं उठाते till today nothing अब क्या करना है you want to continue for another 3 years like this and do it क्यों we have to some correction has to start from somewhere ना एक जगह से होनी चाहिए ना correction so why not this मैं क्या पागल हूँ क्या यहाँ पर मैं 30 साल 35 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ मैं I will go for the post of president क्योंकि I want to cling on to this thing my manifesto is very clear I said nothing to you I'm not going to rule there I want to separate the things separate the system make it as an umbrella organization a real umbrella organization so that we will also raise our head and go to the government as a representative. Right. So I have not accepted this thing. I have already written to societies this thing. I have given all my protest letters which I have given to RO. RO has not been. See, ऐसी बात नहीं है. RO may be a respected person. He may be an editor. He may be a scholar. He may be a this thing. But if he should know his job well, na. If there is an AIKS constitution उसमें लिखा है कि you have to satisfy yourself with the list. And they have given them 2 months time. You should prepare for the elections. किस लिए? बैठने के लिए? अरे you have to go through the list and see that क्या है यार ये updated list है क्या? If you are going to give this list, and we have to approach voters all over the country and abroad also. उनको कैसे मैं वो ये करूँगा? They cannot give me a this thing. How to approach them for votes? तो यही मैं point out करते करते I thought that sense will prevail on them and they will postpone the elections. Call for an AGM. Let the AGM decide. मैं नहीं बोलता मेरी सुनो आप मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को ये 2 में से 1 को हारना ही है दूसरी बात है that is only when the elections are held free and fair तो उसमें ये है but this is my complaint and this complaint still remains I have nothing against any individual but we should change the system we should change these old habits which have spoiled and जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया अभी तक ये यहाँ की बात नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है अगर रमेश राणा बोलते हैं कि ये होता ही रहता है तो then it's okay I have no I don't want to जी मैं आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे जो टेम्पल्स हैं वहां पे भी इश्यू हैं वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी संस्थाएं हैं वहां पे भी यही इश्यूज आ रहे हैं अगर हम TRN इस बात को बोलना चाहता है कि भाई हमारे में यूनिटी नहीं है उस टाइम पे TRN की आवाज को दबाया जाता है बोलता है कि आप क्यों सोशल मीडिया पे बोल रहे हो कि हमारे में यूनिटी नहीं है हम लोग एक हैं लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि जरूरत है इस समय बहुत जरूरत है एक होने की अभी हम AIKS की बात अभी हम AIKS की बात करते हैं इलेक्शंस फेयर नहीं हुए हैं आपके पास प्रमाण भी है प्रूफ भी है मैं चाहता हूं AIKS की तरफ से भी बहुत जल्द वहां के जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया जो उसमें रहे हैं जिन्होंने वो प्रोसेस को किया है मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें उनके साथ भी बात करूं उन्हें सामने लाऊं और उनसे जरूर क्योंकि ये खाली आपकी बात नहीं ये पूरे समाज की बात है ये सवाल मेरा नहीं बल्कि पूरे समाज का है क्योंकि अगर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो नई ऑर्गेनाइजेशन और नई जनरेशन है वो क्या सीख लेगी मैं तो ये बोलता हूं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है
तो इस पे जरूर हमें बात और भी आगे करनी चाहिए, और मैं वादा करता हूं कि ये यहाँ बात खत्म नहीं होगी। हमें कोई किसी के साथ बैर नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, इट्स फेयर। कुछ नहीं है, हमें आई हैव सिर्फ नथिंग हमें अगेंस्ट हिम। सिर्फ हमें सिर्फ उनसे कुछ सवाल पूछने हैं कि आपने क्या प्रोसेस किया, क्यों ऐसा किया, क्यों जल्दबाजी की, वो जरूर हम उनसे बात करेंगे। इसी बात को आगे करते हुए मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा मट्टू साहब। जैसे आपको पता है कि एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इशू हमारे समाज में उभर के आया है वो है सुसाइड केसेस। जैसा कि अभी हमने परसों एक स्टोरी चलाई है बबलू जी की, जिन्होंने सुसाइड किया है, और उनकी वाइफ, वो वीडियो भी हमने शेयर किया है सबके साथ। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन कामों पे ध्यान देने की जरूरत है, इन कामों में और फोकस करने की जरूरत है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ? नो डाउट, मैं ये कहता हूं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये फोकस इंपॉर्टेंट है इन चीजों पे बात करने के लिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जो मैंने पहले ही आपको बोला कि हमें उनके बारे में सोचना है जो कि जी, ऊपर नहीं उठ सके, जो कि राइट, एक जब भी आप अगर आप साफ पानी ले, बाल्टी में ले ले साफ पानी, लेकिन उसके नीचे भी कुछ ना कुछ रेजिडुअल थिंग रहेगी, नीचे सेटल हो जाएगी। इसी तरह मैंने बोला कि दे आर आवर इम्पोर्टेंट पीपल। हम तो आ गए ऊपर, हम हमारा एक ही दुख है कि हमने अपना होमलैंड खोया है। दैट्स द ओनली दुख राइट, वी हैव, बट मॉनिटरली, इकोनॉमिकली, status wise we all come up. But what about those who could not come up? What about those who are in Kashmir? हमें उनको देखना है, उनको कोई नहीं देखा है। देखिए, हमारे ही लोग, जब अलॉटमेंट होती है क्वार्टर्स की, द अलॉटमेंट इज नॉट फेयर। किसको राइट, जो वो लाता है, जिसको जरूरत है उस बेचारे को नहीं मिलती है। एंड ही इज सेइंग दैट, मैंने देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला कि क्या है, कोई नहीं है वहां पर हमारा जम्मू में, या वहां पर कोई नहीं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिन्होंने देखा नहीं है ये। I am going to take up this matter with the relief commissioner also after seeing your राइट, interview with him, meeting with the family. और जो भी उनको आपको लगे कुछ हम कर सकते हैं यहाँ से, हमारा ट्रस्ट है, we are open, आप बोलिए, and we'll take care of the family for 1 year. राइट, जो भी आप बोलेंगे, every month we'll send them this thing, and somebody has to राइट, monitor it, and यस, somebody यस, has to own डेफिनेटली, the family and see that they don't get into over money or under money. राइट, राइट, उनको राइट, जो पैसा आएगा कैसे उसका उपयोग करेंगे। एंड देन आई टेल यू वन थिंग, this is the thing. Why should we take to suicide? क्या किसी ने देखा नहीं क्या अभी तक इसको? अभी सब जाके बोलते हैं कि आज ये वो गया, रोना लगता है, वो हो गया। बट पीपल हु आर देयर, this is the priority with us. राइट, KOA, I appeal to KOA, I appeal to all these यस, overseas organizations who are sending money. They should also ensure that the money reaches the right people. राइट, नहीं, it should be directly reaching to the right people, जैसे आपके मोदी साहब ने किया है कि straight to the account. राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा होना चाहिए, and then somebody should be there to monitor अगर पैसा इनको जाता है तो how they are utilizing it. And third thing यस, is also we should see that they should come up on their own. अगर उसकी बीबी है या कोई ये है, बच्चा है, how to educate them, how to give them training, how to make them यस, employable. अगर वो थोड़ी पूरी पढ़ी लिखी है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो कहीं पर भी, राइट, प्राइवेटली वो ये। राइट, एंड दिस राइट, इज द वे वी शुड रीच अवर रिलीव। ये नहीं कि भाई आज दे दिया, वो जाके वो करो, कंधे पर रखो। नो, वी शुड आइडेंटिफाई दीज पीपल। आई रिक्वेस्ट यू थ्रू योर चैनल, आप ये काम ले लो, ब्रिंग इट सम केसेस टू अस, वी विल आल्सो हेल्प देम। एंड दिस इज आवर कर्तव्य हमारा। ये अपना नहीं है कि मेरी फैमिली उठ गई, मैं उठ गया, मेरे बच्चे हो गए, लेकिन वी शुड take one step outside our own distinct community, right, outside your own family, and then see what is happening around us and see that they are also taken care of. कुछ नहीं होता इससे। This is every Kashmiri Pandit. We are a very small, minuscule, respectable family, and इसमें से कोई लोग पीछे रह गए because of शर्म से या कुछ से, या भीखने मांगेंगे या नहीं जाएंगे, मरेंगे लेकिन वो नहीं करेंगे। बट वी हैव टू लुक इनटू दीज फैमिलीज एंड सी दैट ऐसा नहीं हो कि कहीं वो शर्म के मारे वो कहीं अपने कहीं गलत स्टेप न ले। एंड वी हैव टू रीच देम रिलीफ वेरी रिस्पेक्टफुली। जी रमेश जी, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं उस फैमिली का मॉनिटर करूंगा, और मैं उनसे फिर जाके मिलूंगा और बात करूंगा उनसे कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, और मैं प्रॉपरली देख सकता हूं कि देखूंगा जाके कि क्या क्या चीजें और भी कर सकते हैं, और साथ साथ में ऐसी फैमिलीज को मैं 1 मिनट, आई विल इंटरप्ट यू। यू अडॉप्ट दैट फैमिली, एंड जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको मंथली भेजेंगे, उनको लिखो। ये है वन। सेकंड थिंग इज, इफ देयर इज सच फैमिलीज और भी है, वी विल टेक केयर ऑफ देम।
We have a very good supporting community members here. We call them helping hands. हमने एक Right, helping right. hands group है, and they every month they contribute to our trust, and from that money, I am not giving it. The people here are giving it. हमारे समाज जी, के जी, लोग ही दे रहे हैं, but it should reach the जी, right place. It should reach the right बिल्कुल, people and right place. बिल्कुल। यही यही एक इश्यू है जिस पे हम लोग बात करते हैं कि वाक़ई में आपने जो बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी जिनके पास क्वार्टर्स नहीं है। इवन मैंने भी कुछ लीव डिपार्टमेंट्स में कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, और वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, बट वो रेंटेड बेस पे रह रहे हैं, रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हैं। और उसी तरह वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं जगती में, जिनके पास अपने मकान भी है और साथ-साथ में वहाँ पे भी लेकिन रह रहे हैं। क्वार्टर को भी पकड़ के रखा है. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। We know ज़रूरत that. है। राइट, राइट। We तो should have ज़रूरत है। watchdog. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। समय आ गया है कि उस चीज़ पे भी हम लोग ध्यान दें, उस चीज़ पे भी हम काम करें, और मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालाँकि आपका और मेरा पहला इंटरेक्शन था, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सी चीज़ों पे बात हुई, और इन फ्यूचर भी आपसे हम लोग बात करते रहेंगे। और एआई केस की इलेक्शन को लेके हम वहाँ इलेक्शन कमीशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि आपने भट्ट साहब बोला, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं जानना ज़रूर चाहूँगा, मैं नहीं बल्कि हमारी कम्युनिटी जानना चाहेगी। मेरे से मतलब खाली मैं नहीं हूँ। ये बात सबको पता लगना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहा, उस पे एक बातचीत हो। ज़रूर मैं उनसे बात करूँगा, और आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे कार्य करते रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद द राइट न्यूज़ को अपना समय देने के लिए। Thank you very much. Before winding up, I just want to make a small point. जी, You pick up the phone anytime if there is any deserving this thing. Our trust here, it's a big trust, Right. supported by people of Bangalore, हमारी Right. community के आदमी. We are ready to help them, but it should be genuine. One. Second thing is Definitely. that unless and until we start from somewhere, AIK से ही शुरू कर दो, and we should clean all our organizations and make them credible. And this is बिल्कुल। this has happened. 120 आदमी, 130 आदमी, how can they decide the fate? And nothing has been achieved in the last 30 years in Delhi. Right. Any organization. क्या है ये मजाक थोड़ी है. And now another 30 years will go like this, and then we'll keep on beating our chest. वो नहीं होना चाहिए. I'm not against anybody, but let us do our job sincerely. ये हमारी बाप दादा की जायदाद नहीं है कि हम बैठेंगे वहाँ पर और then we play with the sentiments of people. We should think about people who go in mini buses, who go on cycles, who Right. go on this thing, Right. rather True. than we may have everything. We should think about those people. यही मेरी प्रार्थना है सबसे. And you feel free anytime, any help, any needy person wants any help, you please take lead. And I will support you. Okay. Thank you so much. Thank you very much for talking to Thank me you. and giving me an opportunity on your TV. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.